Sharia does not impinge upon the social life of any citizen of the country except the Muslims. The people who should object to Sharia or people who should have problems with Sharia or who benefit from Sharia are Muslims. Nobody else gets affected. Sharia is basically in India, there is no law called Sharia. What you have is a Muslim personal law, which is derivative of Sharia. Now, there is no such thing as halala, which is constantly thrown around. There is no such thing as triple talaq in Sharia or in Islamic law. Halala is a very imaginative and ingenious Indian jugaad. And it is exclusive only to the Indian subcontinent. No other country in the world, not even Saudi Arabia, which is the god of Sunni Islam, practices that. Because it has nothing to do with Islam or the religion or the Quran or the Sharia. I think it's important कि आप Islamic doctrine पढ़ें और कुछ नहीं तो. Excuse me, Islamic doctrine क्या चीज़ है? All right, 3 चीज़ें मानी जाती हैं. Life of the Paigambar, peace be upon him. अली सिन्हा की किताब पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एंड द मुस्लिम्स. दूसरा, आप हदीस और जो भी आपके माने जाते हैं शरिया का आधार जहाँ से आता है, यू शुड बी फेमिलियर. टुडे देयर आर मेनी सीरियस lectures available on these issues, and luckily for us, even Hindus are beginning to try to understand Islam. Now, the point that I would like to say is this. History of Islam is very bloody, and it's not me, but Will Durant said, and he is one of the leading authorities on history of civilizations, that the Islamic conquest and rule of India is the bloodiest chapter in the history of mankind. And the estimates vary from 500 million to 800 million Hindus slaughtered, and hundreds of thousands, lakhs of women, being Hindu women, being captured as sex slaves and sold not only in the markets in Lahore and Delhi, but also taken to Arab countries and sold there as sex slaves. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, इतिहास उन्होंने लिखा है, हिंदुओं ने तो लिखा ही नहीं वो सारा इतिहास. Now, secondly, आप कह रहे हैं आपने कभी PFI सुना ही नहीं है, तो आप कहेंगी सिमी भी नहीं सुना. These are actually, they have a front. मेरे घर के पास है PFI का ऑफिस, और वो आए दिन टीवी पे होते हैं. PFI के जो लीडर्स हैं, आए दिन they are on prime time TV, and you say you never heard of them, and they've been on prime time TV, हकानी साहब वगैरह वगैरह, every single night. Secondly, these are also underground organizations which have been involved in terror activities. It's not my saying, these are globally known facts. और ये अभी जब बैन लगा है PFI पे, ऐसे नहीं लगा कि मधु किश्वर ने सोचा कि PFI डेंजरस है. It's taken guts of, and even now the crackdown is not serious enough. उनके ऑफिसेस अभी भी, दिल्ली का ऑफिस अभी भी खुला हुआ है. फिर आप कहती हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ. अभी आप मुझे ये बताइए, आपको मालूम है कि जब शाह बानो का केस हुआ था, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, और उसका मैंडेट था कि शरिया के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है वो बताएंगे, ताकि आए दिन झगड़ा ना हो जैसे शाह बानो के समय हुआ, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरटर्न करना पड़ा बिकॉज दंगे शुरू हो गए, माहौल बहुत बिगड़ गया था. और आज तक उन्होंने नहीं किया. इट शुड बी, यू शुड डिमांड ऑफ देम कि जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती हैं तो बताइए ना, है कि आप कह रही हलाला होता नहीं. आई नो एटलीस्ट 50 विक्टिम्स ऑफ हलाला प्रैक्टिस पर्सनली. सो इफ़ यू से, एंड आई एम नॉट अ मुस्लिम. ट्रिपल तलाक आप कहते हैं वो भी इट्स नॉट मैंडेटरी. कितनी चीज़ें हैं, पॉलीगमी, ability to not only have 4 wives but any number of relationships even outside marriage. ये सब अगर नहीं आपने सुने तो प्लीज़ सुनिए. देवबंद को उसका लिटरेचर पढ़िए. अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ओपन लेटर लिखी थी देवबंद का लिटरेचर साइट करते हुए, कि जिस तरह की ये बातें पढ़ा रहे हैं, जिस तरह जामिया और AMU का सिलेबस भी गज़वा हिंद की सीख पढ़ा रहा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं. These are part of curriculum even in
AMU, Jamia, etc. And you're saying you haven't heard of it. I think If you we can- haven't heard yeah. of it, then it's time that you inform yourself. And let's not have this, phony goody-goody version of Islam, which doesn't exist in the world we live in.